हेलो प्रोग्रेसिव किड्स, वेलकम टू प्रोग्रेसिव मंत्रा। अब सेकंड पार्ट आ गया मॉडर्न वर्ल्ड का क्वेश्चन बैंक विद आंसर्स। लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स अ पाथ जो आपको 90% प्लस की तरफ लेके जाएगा अगर आपने इसको ढंग से करा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर 2 बिगिन? 1939। विच कंट्री इन एशिया इमर्ज्ड एज imperialist power? Japan. Who led fascism in Italy? Mussolini. Who led Nazism in Germany? Hitler. Which pact allowed Germany to annex Sudetenland? That was Munich Pact. Which two Japanese cities were destroyed by atomic bombs? Hiroshima and Nagasaki. When was UNO formally constituted? 24 October 1945. Where was UN Charter signed? San Francisco. Which two superpowers emerged after World War II? USA and Soviet Union. Which policy did Britain and France adopt towards Germany and Italy? Appeasement. Next, two markers. Why did Japan support fascist powers? Japan signed Rome, Berlin, Tokyo Axis, gaining freedom to expand Asia while supporting Germany and Italy. What was the Anti-Comintern Pact? A pact signed by Germany, Italy and Japan to oppose communism and Soviet Union. यहाँ पर कम्युनिज्म का क्या मतलब था? ये जबरदस्ती की डिमांड्स थी जो बुली करके और आपके ऊपर दबाव डाल के मनवाई जा रही थी, तो कम्युनिज्म को अपोज किया जा रहा था बाय सोवियत यूनियन ऑल्सो. ओके, व्हाई वाज जर्मनी डिससैटिस्फाइड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन? The Treaty of Versailles imposed harsh conditions, leaving Germany politically, military, and economically shattered. What was appeasement policy? अपीजमेंट का मतलब होता है जहां पर आप कोई भी सौदा करने के लिए कुछ चीजें मानो और कुछ चीजें ना मानो, तो वो था अपीजमेंट पॉलिसी थी. ब्रिटेन एंड फ्रांस टॉलरेटेड जर्मनीज एग्रेशन टू यूज अगेंस्ट सोवियत यूनियन. टॉलरेटेड मतलब वो रेडी नहीं थे लेकिन उन्हें टॉलरेट करना पड़ रहा था. What happened in Spain in 1937? A civil war broke out. Hitler supported General Franco against elected government. What was the Munich Pact 1938? Britain and France allowed Germany to annex Sudetenland in Czechoslovakia. What was immediate cause of World War II? That was Germany's invasion of Poland on September 1, 1939. What happened to Germany after World War II? It was divided into 4 zones. Nazi party was banned and army disbanded. इन क्वेश्चंस को आप 3 मार्कर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा और मैटर ऐड करके और एक्सपैंड करके. What was the major consequence? Consequence का मतलब होता है result of World War II in Asia. Japan was placed under US supervision until 1949. What is the UN flag symbol? The world map from North Pole surrounded by olive branches in light blue background. नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता ही है और आ भी रहा है पिछले 5 सालों में. कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. इंट्रोडक्शन दे दो आप. इट ब्रोकआउट कब ब्रोकआउट हुआ, यानी आपने बता दिया कि 1939 में ब्रोकआउट हुआ ड्यू टू एग्रेसिव एक्सपेंशन बाय फैसिस्ट पावर एंड फेलियर ऑफ पीस एफर्ट्स. पॉइंट्स क्या है इसके, इनको एक्सपैंड कर लेना और सब पॉइंट में लिख लेना. हार्श ट्रीटी ऑफ वर्साइल लेफ्ट जर्मनी ह्यूमिलेटेड. rise of fascism in Italy and Nazism in Germany glorified war, मतलब और उसको बढ़ा दिया. Aggressive expansion in Germany annexed Rhineland, Austria, Czechoslovakia, Italy attacked Ethiopia. Appeasement policy या policy of appeasement एक ही बात है. Of Britain and France encourage aggression यानी गुस्सा. Germany invasion of Poland triggered the war. What is the conclusion? So, unchecked aggression, failed diplomacy, and imperialist ambition led to World War II. Consequences of World War II. Consequences का मतलब results. World War II was most destructive war in history in 1945 with massive global impact. क्या हुआ? Huge loss of human property. Cities were destroyed. Holocaust. That means Jews were exterminated or sent to camps. बहुत बहुत बुरा था ये उस टाइम पे Jews के लिए. Atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki. Germany divided into 4 zones. Nazi party was banned. Emergence of US and USSR superpowers starting the Cold War. क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल थे और हैं भी अभी, तो उनके बीच में भी कोल्ड वॉर शुरू हो गया था. World War II reshaped the world order, weakening the imperialism and paving way, यानी making way for independence movement. Independence movement तभी होती है जब कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम, कोई भी हैपनिंग जो है लोगों के हिसाब से नहीं चलती और लोग नाखुश होते हैं. ठीक है. नाउ
पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं इसके अंदर और आए हुए हैं. इंट्रोडक्शन. ब्रिटेन एंड फ्रांस अडॉप्टेड अपीजमेंट टू अवॉइड वॉर बट इट स्ट्रेंथन फासिस्ट पावर. अपीजमेंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को मान रहे हो लेकिन दिल से नहीं. आप उसको इसलिए मान रहे हो क्योंकि आपको आगे की चीजों को थोड़ा ठीक रखना है, बट दे आर नॉट विलिंगली एक्सेप्टेड. सो पहला क्या है पॉइंट? अलाउड जर्मनी टू रीबिल्ड एज आर्मी बियॉन्ड वर्सल्स लिमिट. Silent on annexation of Rhineland and Austria. Did not act against Hitler's support to Franco in Japan. Signed Munich Pact allowing annexation of Sudetenland. Strengthened Germany and Italy against Soviet Union. Conclusion क्या निकलता है? Appeasement failed, emboldening fascist power and directly leading to World War II. Role of Japan in World War II. Japan rose as imperialist power and aligned with fascist nations, defeated Russia in 1905, proving military strength, signed Rome, Berlin, Tokyo Axis, Germany, and Italy, signed anti-Comintern Pact against communism, expanded aggressively in Asia and Pacific, faced destruction after atomic bombing in 1945. Conclusion is Japan's imperial ambition and alliance with fascist powers made it a central player in World War II. फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. नाउ ये एक पीस कीपिंग बॉडी थी यूनाइटेड नेशन. इसकी फाउंडेशन क्यों हुई? क्योंकि वॉर्स चल रहे थे और आगे बाकी कंट्रीज को भी बहुत अफेक्ट हो रहा था. तो पीस कीपिंग बॉडी बनाने का मतलब ये था कि आगे वॉर्स ना हो और इंटरफेयरिंग एजेंट बन के ये बाकी कंट्रीज का भी भला सोचे. So horrors of World War II led to the creation of UN in 1945. इस पे क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन आ रहा है. Leaders like Churchill, Stalin, Roosevelt initiated discussions. UN Charter signed in 24 October 1945 in San Francisco, based on sovereignty and equality of nations. Sovereignty मतलब self-rule, equality मतलब सब equal हैं. There is no autocratic rule, no rule of one leader. Aims were to maintain peace, prevent wars, solve disputes peacefully, promote human rights and international cooperation. Conclusion: the UN became a global platform for peace, security, and कोऑपरेशन. आ जाओ, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इस वाले को. तो formation of UN and objectives of UN. The UN was formed to ensure peace and cooperation among nations, to maintain international peace and security, prevent future wars, solve disputes peacefully, promote human rights and freedoms, encourage economic and social, cultural, humanitarian cooperation. अब कंक्लूजन क्या आ रहा है? यूएन ऑब्जेक्टिव्स रिफ्लेक्टेड ह्यूमैनिटी डिजायर फॉर लास्टिंग पीस एंड progress. Emergence of superpowers after World War II. World War II weakened imperial powers and gave rise to dominant nations, two dominant nations. USA emerged strong due to economic and military power. Soviet Union यानी USSR एक ही बात है, gained prestige after defeating Nazi Germany. Both nations led to opposing blocs. Cold War tensions began between capitalist and communist ideologies. Imperialist powers like Berlin and France declined. The post-war era was defined by US and USSR rivalry, shaping global politics. अब ये देख लो, ये सारी की सारी इम्पैक्ट था कॉलोनीज के ऊपर. यूरोपियन पावर लॉस्ट ट्रेंड, कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका डिमांडेड इंडिपेंडेंस, nationalist movement gained momentum, UN supported self-determination, and many nations became independent post यानी after 1945. Now events क्या थे World War II के? Germany annexed Austria and Czechoslovakia. Civil war in Spain, supported by Hitler. Munich Pact allowed annexation of Sudetenland. Germany invaded Poland in 1939. War ended in 1945 with defeat of Axis powers. Importance of UN flag. Off track question है, but important है. Circular world map from North Pole view, surrounded by olive branches, symbolizes peace. Light blue background represents harmony, and emblem reflects global inclusiveness. Adopted as official symbol of UN. ठीक है. Next, one word देखो. Who was assassinated in Sarajevo in 1914? Archduke Ferdinand. Which alliance was formed in 1882? Triple Alliance. Which alliance was formed in 1907? Triple Entente. Which canal did Germany build to challenge Britain? Kiel Canal. Which British ship was sunk by German U-boats in 1915? Lusitania. Who led Russia's October Revolution 1917? Lenin. Which treaty was signed with Germany after World War I? Treaty of Versailles. Where was League of Nations headquartered? Geneva. Who introduced fascism in Italy? Mussolini. Who established
Nazism in Germany, Hitler. What was the immediate cause of World War One? Assassination of Archduke Ferdinand of Austria in Sarajevo by Serbian youth in 1914. Why did Germany build in Baghdad's railway? To strengthen military and trade access to East, but it threatened British colonies. What was Pan-Slav movement? Nationalist movement aiming to unite slaves under Serbia, supported by Russia but opposed by Austria. Why did USA join World War One? The sinking of Lusitania and economic interest pushed USA to join in 1917. Which two major developments occurred in 1917? USA entered the war and Russia withdrew after October Revolution. What was Treaty of Saint-Germain? It separated Austria and Hungary, creating new states like Czechoslovakia and Yugoslavia. What was Treaty of Service? It broke up to Ottoman Empire, giving mandate like Palestine to Britain and Syria to France. What was Wilson's 14 points? A peace program proposed by US President Wilson, including idea of League of Nations. Why did League of Nations fail? It failed to act against aggression like Italy attacked in Ethiopia and Japan attacked on Manchuria. What was New Deal of USA? Roosevelt's economic recovery program after 1929 depression, creating jobs and supporting farmers. अब ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जो इसके अंदर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसके अंदर जो भी पॉइंट्स थे, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, फैजम, नाजम, वो सारे के सारे हम थोड़े पॉइंट वाइज करेंगे और एक्सप्लेन करके, जिससे ये और अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दे दिए गए वर्ल्ड वॉर टू पे। अब इनको कर लेना अच्छी तरीके से। डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी आगे होंगी आगे के वीडियोस में, और शॉर्ट नोट्स। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर कर देना वीडियो को।